Okay, so Mangal Mehta students, and today we are going to discuss about chapter 2 solutions. And as we were discussing about some concentrating terms, molality, mole fraction, mass percentage. So now today we are going to start a very important topic, Henry's law. Henry's law. Henry was a scientist which stated a law. This law was on the basis of partial pressure, or you can say vapor pressure, and the mole fraction. That means you can say easily also solubility. Suppose we have a solution. Then means now we are adding in this solution solute particles. Now what is the solubility of these solute particles in the solution can be calculated with the help of this Henry's law. And what Henry's law states? Henry's law states that the partial pressure of the solute, or the solute may be gas, partial pressure of the solute or gas in the solution is directly proportional to the mole fraction of the solute particles. Okay, so this mole fraction is of solute particles, and this partial pressure is also of solute particles. Now you know very well, as we can write here a constant KH, which is Henry's constant. So now in Henry's law, what is Henry's law? Henry's law says that the partial pressure of gaseous particles in the solution is directly proportional to their mole fraction. जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पार्टिकल्स के सॉल्यूशन के अंदर होंगे, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट हेनरीज लॉ. तो हेनरी लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास हैं व्हिच यू हैव टू स्टडी इन योर बुक. नंबर 1, लेट्स डिस्कस अबाउट द सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमें वहां पता चलता है एप्लीकेशंस में, लाइक नंबर 1, एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स जो आपके समुद्र में रहते हैं, उनका क्या है कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या है कि जो आपकी सोल्युबिलिटी है किसकी, गैस की, ऑक्सीजन की इन वाटर, गर्म वाटर में अगर बात करें तो गर्म वाटर में वो ज्यादा होती है, गर्म वाटर में कम होती है, ठंडे पानी में ज्यादा होती है. इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ठंडे पानी में मोर कंफर्टेबल रहते हैं. दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कोल्ड ड्रिंक बोटल्स. ठीक है. तो जब कोल्ड ड्रिंक बोटल्स की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक बोटल्स में हमने देखा कि कोल्ड ड्रिंक बोटल्स की जो सील होती है, जो उनका ढक्कन होता है, उसको आप जितने ज्यादा प्रेशर से वहां पे क्या करेंगे, बंद करेंगे, उतना ही ज्यादा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन हो जाएगी. ठीक है, वो सब आप जानते हैं. थर्ड हमने एक दो और पढ़े थे. थर्ड हमने पढ़ा था माउंटेनर्स. जो आपके माउंटेनर्स होते हैं उनका क्या है कि जितना ज्यादा वो हाइट पे चले जाते हैं एट द एल्टीट्यूड, तो वहां पे ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका बहुत कम होगा. अब हमने ओके, सो वंस अगेन द नेक्स्ट लॉ इज रोड्स लॉ. एंड इन रोड्स लॉ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अगेन लाइक पार्शियल प्रेशर, और टर्म्स विल बी पार्शियल प्रेशर and mole fraction. Suppose we have a container in which we add more than two, you can say two or more than two component 1 A and the component 2 B. Okay. Now this is the formation of solution. So what Raoult's law says? Raoult's law says that the vapor pressure P, the vapor pressure of component A, we can say P8, and is equals to the product of pure vapor pressure of component A
and mole fraction of component A. Now you will say PB similarly equals to P naught B XB. Okay, you know very well, according to Dalton's law of partial pressure, the partial pressure of each component, the sum of partial pressure of each component is equals to total pressure, and you can write PA plus PB from here. PA plus PB equals to this plus this, and from here you can common out 1 XA, because XA you know very well, XA plus XB is always equals to 1, and write the value of XA1 minus XB over here, and now you can common. Okay, so this was about the Rolle's law. And what is the difference between Rolle's law and Henry's law? In Henry's law, the partial pressure, okay, listen carefully, the partial pressure is only for a gas component, and now here this may be for a liquid and as well as solid component, okay, the PA, and P naught is the vapor pressure of pure, and XA is the mole friction. Okay, so this was about Rolle's law, and before it we had discussed about Henry's law. So you have to learn Henry's law, their applications, and the factors which affect that law. There are some factors like temperature, pressure, and surface area. Okay, so this was all about the Henry's law and Rolle's law. Thank you.